Hey friends, this is Shamraghi. Today I will discuss the CSIR net solutions of complex analysis. Okay. So this question came in June 2018. Okay. This is the question that we have to find out the integral. Integration e to the power z by z square minus 1 dz. The value of the integral is 0 to pi I e minus e inverse. Okay. जब भी आपको इस टाइप्स की इंटीग्रेशन दी जाएगी देन देर आर टू फॉर्मूलास एक्चुअली बाय दोज टू थ्योरम्स मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड. वन इज कॉल्ड Cauchy theorem and another one is Cauchy integral formula. Okay, so I am writing the theorem here. First see it. Cauchy integral formula. Let f be analytic in a simply connected domain D and C is a closed curve lying in D. Okay, and z0 belongs to C. Then integration C f of z by z minus z naught dz equals to 2 pi I f of z naught. Okay, so this is the Cauchy integral formula. What this say? This say that let f be analytic in a simply connected domain D and C is a closed curve lying in D. Then for any point z0 belongs to C, integration C f of z by z minus z naught dz equals to 2 pi I f of z naught. Okay, now let f be a analytic function. Here it will be function. What is analytic function mean? Right? Analytic function का meaning क्या है? Analytic function means a function f is analytic at a point if there exists a neighborhood in which the function f is differentiable. Right? इस point पे function को हम analytic मतलब complex analysis पे मोस्ट ऑफ द डेफिनेशंस पे आपको नेबरहुड में जो फंक्शंस का बिहेवियर है ना उसको भी कंसिडर करना होगा. राइट? सो एफ इज एनालिटिक एट दिस पॉइंट मीन्स नॉट ओनली इन दिस पॉइंट बट देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड इन विच द फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल. ओके, इन दैट केस वी विल से दैट एफ इज एनालिटिक एट दैट पॉइंट. ओके, अब यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है कि लेट एफ बी एनालिटिक फंक्शन इन ए सिंपल कनेक्टेड डोमेन. व्हाट इज डोमेन? डेफिनेशन ऑफ डोमेन इज ओपन कनेक्टेड रीजन. राइट? So f is analytic in a simple connected domain D. Suppose this is a domain D. F is analytic here. F is analytic here, and C is a closed curve lying in D. Okay, C is a closed curve lying in D. C, suppose this is the closed curve जो कि D पे है, and Z naught belongs to C. Okay, then this formula integration C f of z by z minus z naught dz equals to 2 pi I f of z naught, where z naught must be belongs to the closed curve. Right? And the function here it is given that function is analytic in the whole domain. अब यहाँ पर एक बात देखिए, अगर हम ये कहते हैं दैट द फंक्शन इज मतलब आप कुछ भी डेफिनेशंस देखेंगे ना दिस टाइप्स की तो वहाँ पर आपको एक चीज़ दिखेगा कि फंक्शन इज एनालिटिक इन ए सिंपल कनेक्टेड डोमेन डी एंड सी इज द क्लोज्ड कर्व लाइंग इन डी. तो अगर इफ इट इज सेड दैट द फंक्शन इज एनालिटिक इन द क्लोज्ड कर्व सी देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? एक्चुअली हियर द प्रॉब्लम इज दैट नाउ कंसीडर दोज पॉइंट्स. अगर फंक्शन सिर्फ इस क्लोज कर्व पे डिफाइंड होता या फिर एनालिटिक होता तो दिस पॉइंट्स पे जो नेबरहुड होता, राइट, बाउंड्री पॉइंट्स पे दिस लाई इन द आउटसाइड ऑफ द क्लोज्ड कर्व ऑल्सो एंड हेयर द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. If they say that the function is analytic in the closed curve,
That's why they say that the function is analytic in the domain, right? Connected domain, and we know that the domain is an open connected region. So the function is connected in the the function is analytic in the domain, and C is a closed curve inside the domain, right? तब हम ये कह सकते हैं that if z not belongs to this closed curve, then integration C f of z by z minus z naught dz equals to 2 pi I f of z naught. Okay, so this is the formula, Cauchy integral formula, and the most important thing is that you have to use this formula whenever these types of integration problems occur. Okay, there is another theorem that's called Cauchy theorem. What does that say? That say that let f be analytic function in a simple connected domain D, and C is a closed curve, then integration C Cauchy theorem बिल्कुल मतलब फर्स्ट 2 लाइन्स तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, एंड देन ऐसे आप लोग लिख लेना, देन इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0. मतलब इफ दिस इज ए क्लोज्ड कर्व एंड दिस इज ए डोमेन एंड द फंक्शन एफ इज एनालिटिक इन दिस कर्व, देन इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0. ओके, इफ f is the domain, if f is analytic in the domain and C is a closed curve inside C, then the function analytic, then the integration of this function will be 0. Okay, this is called Cauchy theorem, and this is Cauchy integral formula. Okay, here the difference is that here is a point z naught which belongs to the closed curve C z naught, and the integration C f of z by z minus z naught dz equals to this. Okay, so these are the two formulas. By using these formulas you can solve integration problem. This kind of integration problems comes every year. Okay, every year पे आपको कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम दिखेगा, या तो पार्ट बी पे या फिर पार्ट सी पे. So now came to the solution. They say integration e to the power z by z minus 1. I am solving this problem. Okay, z square minus 1 dz. ओके, कर्व का क्वेश्चन पे कर्व का रीजियन, हाँ, मॉड ऑफ 1 माइनस जेड इक्वल्स टू 1. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से मतलब जो क्लोज्ड कर्व है ना वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटीग्रेशन यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 1. ओके, अब देखिए व्हाट इज दिस रीजियन डिफाइन, राइट? मॉड ऑफ जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल. मॉड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल्स टू आर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल वेयर ए क्या है, ए इज द सेंटर. ए इज सेंटर. पहली बार मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों के लिए सॉल्व कर रही हूँ, तो ये थोड़ा डिटेल पे करूँगी. नेक्स्ट जो वीडियोस होगा वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स का नेट का सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो इतनी डिटेल पे नहीं होगा. इसीलिए ध्यान से देखिए मैं कैसे कैसे कर रही हूँ, मतलब कौन कौन सी प्रोसेस आई एम अप्लाइंग हेयर. ओके, सो देखिए ए इज द सेंटर, राइट, एंड हेयर आर इज रेडियस, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल. तो mod of z minus a equals to r. Here what is the equation given? Mod of z minus 1 equals to 1. तो बताइए इसका सेंटर क्या होगा एंड रेडियस? यस करेक्ट, सेंटर विल बी 1. सेंटर विल बी 1 एंड रेडियस विल बी 1. ओके, सो दिस इज 1,0 actually. This is 0,0 and 1. So approximately this type 0 0 1 0 2 0. So this is the center of the circle, right? अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से पॉइंट पे आपको सिंगुलरिटीज मिल सकता है, राइट? जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0. यू कैन राइट इट जेड प्लस 1 इंटू जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 0. जो डेनोमिनेटर होगा ना उसको 0 करके ही तो आपको मिलेगा सिंगुलरिटीज, है ना? तो z plus 1 z minus 1, that means 1 and minus 1 are the possible singularities, right? तो 1 and minus 1 में से यहाँ पर मैंने जब थ्योरम बताई थी तो बताई थी that this z naught must belongs to the curve, right? तो यहाँ पर देखिए 1 belongs to the curve और 1 belongs to this circle but minus 1 does not belongs to this circle, क्योंकि minus 1 तो ये है ना, this is minus 1
0, and this is our circle. This is suppose closed curve C. This point is z0 1, right? This point is z0, and this does not belongs to here, right? So what we can say now? Now we will integrate this. Okay, integration C mod of z minus 1 equals to 1. एक्चुअली मैं यहाँ पर ही कर देती हूँ. यहाँ पर देखिए, इंटीग्रेशन सी मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल्स टू 1 e टू द पावर z माइनस z प्लस 1 z माइनस 1 dz. एंड आप लोगों ने देखा है कि z इक्वल्स टू 1 इज इन द कर्व, राइट? सो z इक्वल्स टू 1 पे सिंगुलरिटीज. सो दैट इम्प्लाई इंटीग्रेशन mod of z minus 1 equals to 1 e to the power z by z plus 1. Actually this is f of z, right? F of z by z minus 1 dz. Okay, where f of z equals to e to the power z by z plus 1, right? Now, so what was the formula? The formula was 2 pi I f of z naught. That means 2 pi I f of 1. Now put the value z equals to 1 in this function. What will be the value? 2 pi I into 1. What will be this? E by 1 plus 1, 2 equals to pi I e, right? So answer देखिए यहाँ पर 0 pi I e inverse. So pi I e will be the answer. तो देखिए सेकेंडो के हिसाब से अगर आपको फॉर्मूलास पता होगा तो आप कर सकते हैं, राइट? एंड दिस विल गिव यू 3 मार्क्स बिकॉज दिस केम इन पार्ट बी. ओके, सो दिस टाइप्स की प्रॉब्लम्स अगर दी जाएगी तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करना. ओके, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला से. आप चाहे तो इसको रेसिड्यू थ्योरम से भी कर सकते हैं. जिन्होंने रेसिड्यू थ्योरम स्टडी किया है उनको पता होगा कि हाउ टू यूज़ दिस रेसिड्यू थ्योरम. और मैं नेक्स्ट जो वीडियोस होगा जहाँ पर कॉशी इंटीग्रल फार्मूलास के सॉल्व होगा, और अगर इस टाइप्स की कुछ प्रॉब्लम्स हैं देन आई विल यूज़ रेसिड्यू थ्योरम. ठीक है ना? क्योंकि एक प्रॉब्लम को जब आप 3 और 4 वेज से सॉल्व करेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, राइट? ओके, नाउ केम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This is very important question. This question also came in June 2018. June 2018. Part B, okay? Let f such that z mod of z less than 1 to C be a non-constant analytic function. Which of the following conditions which satisfy f? f कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? ओके, नंबर 1, f of 1 by n equals to f of minus 1 by n equals to 1 by n square for all n belongs to natural number. Number 2, f of 1 by n equals to f of minus 1 by n equals to 1 by 2n plus 1 for all n belongs to script n. Okay. 3, f of 1 by n equals to, no, this is actually less than 2 to the power minus n for all n belongs to script n. Okay, and fourth option is 1 by root over n less than mod of f of 1 by n less than 2 by root over n for all n belongs to script n. जिन्होंने थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा भी है, क्या वो बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन पे कौन सी थ्योरम को हम अप्लाई करने वाले हैं?
Can any all tell me which theorem I will apply here? Yes, here I will apply identity theorem. तो क्या है आइडेंटिटी थ्योरम का स्टेटमेंट, चलिए देख लेते हैं. What is the statement of identity theorem, right? Identity theorem. If f is a analytic function, if f is analytic function defined in D and the set of zeros of f of z in D has a limit point in D, then f equals to 0. That is, f of z equals to 0 for all z belongs to D. This is one, and another form is let f and g be two analytic functions in a domain D and S be a subset of D having a limit point in D and f of z equals to g of z for all z belongs to S, then that imply f of z equals to g of z for all z belongs to D. Okay, so this is the basic statement of identity theorem. यही है आइडेंटिटी थ्योरम का स्टेटमेंट. ओके, अब यहाँ पर बहुत कुछ आपको समझना होगा, क्योंकि अगर इस आइडेंटिटी थ्योरम से पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन केम एवरी ईयर. ओके, इस बार 2019 का दिसंबर में भी आया था, वो भी मैं सॉल्व कराऊंगी बाद में. तो आइडेंटिटी थ्योरम्स की रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो इस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझना होगा. ओके, तभी आप इस थ्योरम रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाएंगे. तो देखिए यहाँ पर क्या कहा इन्होंने. इफ एफ इज एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड इन ए डोमेन डी एंड द सेट ऑफ जीरोज ऑफ एफ ऑफ जेड इन डी हैज ए लिमिट पॉइंट इन डी. ओके, सपोज दिस इज ए डोमेन डी एंड द फंक्शन एफ इज एनालिटिक इन दिस डोमेन. ओके, ये जो डोमेन है ना, यहाँ पर होल डोमेन पे फंक्शन एफ एनालिटिक है. ओके, एंड द सेट ऑफ जीरोस, मैं जीरोस को यहाँ पर रेड डॉट से डिनोट करूँगी. द फंक्शन एफ इज एनालिटिक इन द होल डोमेन, एनालिटिक. ओके, एंड द सेट ऑफ जीरोस ऑफ एफ, सपोज दिस आर द सेट ऑफ जीरोस. ओके, दिस आर द सेट ऑफ जीरोस ऑफ एफ. दिस इज द सेट ऑफ जीरोस, मतलब इस सेट पे अब एवरीथिंग विल बी जीरोस ऑफ एफ. ओके, व्हाट इज सेट ऑफ जीरोस? द पॉइंट एट विच एफ विल गोज टू 0. Okay, f of z naught equals to 0, then the point z naught is said a 0 of f. This is said to be 0 of f. Now, suppose D is a analytic function and the set of zeros, these all are set of zeros, they have a limit point in D. Suppose the इस set का जो limit point है ना, this is the limit point, and we know that limit point either belongs to the set or maybe बाहर भी हो सकता है, right? set के अंदर या set के बाहर भी हो सकता है. So this is the limit point. Now what they say? They say that if f is analytic in the domain and the set of zeros of f has a limit point in the domain D,
फंक्शन एनालिटिक होगा एंड उसका जो लिमिट पॉइंट सेट ऑफ जीरोस का जो लिमिट पॉइंट होगा दैट विल बिलोंग टू द डोमेन, देन व्हाट वी विल से दैट द फंक्शन विल बी आइडेंटिकली इक्वल टू 0. Okay, this implies, these two conditions implies that the function is equals to identically 0. So f of z equals to 0. And what does second theorem say? Second theorem says that f and g be two analytic functions in a domain, and let कुछ इस टाइप का देखिए, t is a domain and this is again s, here f equals to g. Okay, in this set f equals to g, एंड इस सेट का जो लिमिट पॉइंट है ना, इफ दैट लिमिट पॉइंट बिलोंग्स टू डी, देन वी विल सी दैट सपोज दिस इज द लिमिट पॉइंट. ओके, दिस लिमिट पॉइंट बिलोंग टू द डोमेन, देन वी विल सी दैट एफ इक्वल्स टू जी फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी. मतलब हर जगह पर एफ इक्वल्स टू जी होगा. ओके, अब देखिए why I say that this is the another version of this theorem. F of z equals to g of z. If we consider h of z equals to f of z minus g of z, right, then what does they say? They say that h of z equals to 0 for all z belongs to s. मतलब यहाँ पर जो था f of z, set of zeros of f of z in the set s, right? So this is the set of zeros, मतलब s set के अंदर for all z belongs to s, so h of z equals to 0 for all z belongs to s. That means s is the set of zeros of h, right? And this imply that this set का लिमिट पॉइंट भी है d पे अकॉर्डिंग टू दिस, एंड दिस इम्प्लाई दैट h of z इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू d. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, h of z इक्वल्स टू f of z माइनस g of z. ओके, एंड हेयर दे हैव सेड दैट सेकेंड थ्योरम को देखिए, मतलब सेकेंड को ट्रू मान के हम सेकेंड से 1 तक जाएंगे. ओके, सो और वी विल प्रूव दैट दिस टू आर इक्विवेलेंट. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. h of z इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू s, क्योंकि यहाँ पर तो यही कहा है ना, s be a subset of d and f of z इक्वल्स टू g of z. So if f of z equals to g of z, then h of z equals to 0 for all z belongs to s, right? And what does this imply? This imply that capital S, ये जो set है ना, this contains set of zeros of h, right? And set of zeros of h, and this set has a limit point in D. And what does first theorem says? First theorem says that if the set of zeros of f has a limit point in D, then that function is identically equal to 0. And here this function is identically equal to 0, right? So these two are equivalent. इन दो theorem को नोट कर लीजिए एंड बहुत अच्छे से याद भी रखना होगा आपको in order to solve any kind of problem. Okay? तो अब देखिए, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. इन दो थ्योरम से ही आपका आइडेंटिटी थ्योरम का मोस्ट प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड. यहाँ पर देखिए, if z such that mod of z less than 1, this is the domain of the function, right? Mod of z less than 1, again this is mod of z less than 1, अंदर की portion. Okay, so this is the domain of the function. This is a non-constant analytic function. Okay, and what does this say? This say f of 1 by n equals to f of minus 1 by n equals to 1 by n square for all n belongs to script n. Which condition is satisfied by f? मैंने नहीं लिखा, आप लोग लिख लेना. Which condition is satisfied by f? मतलब f जो फंक्शन है ना, उससे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगा. ओके, जो f फंक्शन है ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. मतलब कैन वी गेट ए नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन. ओके, तो इसको हमें आइडेंटिटी थ्योरम से ही चेक करना होगा. देखिए, अगर इस टाइप्स की प्रॉब्लम्स हो तो वहाँ पर आपको एक ट्रिक्स है, दैट पुट 1 by n इक्वल्स टू z. ओके, सो यहाँ पर हम एक अनदर फंक्शन ले सकते हैं, दैट इज g of z इक्वल्स टू z स्क्वायर. यहाँ पर एक फंक्शन है f of 1 by n इक्वल्स टू 1 by n स्क्वायर, राइट? एंड यहाँ पर हमने एक फंक्शन ले लिया g of z इक्वल्स टू z स्क्वायर. ओके, दिस इज ए नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन. ओके, अब देखते हैं कौन कौन से पॉइंट पे दिस टू फंक्शंस विल बी इक्वल. देखिए, f of 1 equals to 1, f of 1 by n equals to 1 by n square, right? So f of 1 by 2 equals to 1 by 4, f of 1 by 3 equals to 1 by 9, f of 1 by n equals to 1 by n square. तो यहाँ पर देखिए, f of 1 equals to 1 square, f of 1 by 2 equals to 1 by 2 whole square, right? So what does this imply? This imply f of
z equals to g of z when z equals to 1 by n for all n belongs to script n, right? क्योंकि f of z मतलब if we put z equals to 1 by 2 then this is the 1 by 2 whole square, z equals to 1 by 3 then this is 1 by 3 whole square. So f of z equals to g of z when z equals to 1 by n. Okay, now what is the limit point of this set? Limit point of this set is limit point equals to 0, z equals to 1 by n, तो इस सेट का लिमिट पॉइंट तो 0 ही होगा ना. And now the question arises, does this limit point belong to the domain? Here what is the domain? This is domain, right? Domain is given here. Okay, so this is the domain. Yes, 0 belongs to here, this is 0 point and this belongs to here. Okay, so this implies f of z equals to g of z when z equals to 1 by n, and this is the set of zeros actually if h equals to f minus g. हम ऐसे भी सोच सकते हैं, देखिए h equals to f minus g, that imply h equals to 0 for all z equals to 1 by n, right? Such that n belongs to natural number. This is the set of zeros of the function h. Okay, and इसका जो limit point है that also belongs to the set, also belongs to the domain, right? So this imply h is identically 0 for all z belongs to D. यही तो था ना आइडेंटिटी थ्योरम, मतलब h equals to 0 in the domain which has a limit point, then we will say that the function is identically 0. सेट ऑफ जीरोस का जो लिमिट पॉइंट है अगर वो डोमेन पे बिलोंग करेगा then that function will be identically 0. So this imply f equals to g of z for all z belongs to D. Okay, so this imply f equals to g of z. What does this imply? g of z का वैल्यू क्या है? g of z का वैल्यू है z स्क्वायर, that imply f of z equals to z square for all z belongs to D. That imply f of 1 by n equals to 1 by n whole square, f of minus 1 by n equals to minus 1 by n whole square. Both are same. This imply f of 1 by n equals to f of minus 1 by n equals to 1 by n square. हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, राइट? तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्वेश्चंस को करना. नेक्स्ट डे मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी. ओके, दैट डे विल बी सम क्वेश्चंस फ्रॉम पावर सीरीज, आइडेंटिटी थ्योरम एंड कॉशी इंटीग्रल फार्मूला. तब तक के लिए आप खुद भी कुछ देखिए, ट्राई कीजिए. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच.